राधा स्वामी संतोषी वाणी सुधा जी की चारी मन हरि विमुखन को संग, चारी मन हरि विमुखन को संग। ये परम संत सद्गुरु सूरदास जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Surdas. सूरदास एक बड़े अच्छे महात्मा उत्तर भारत में हो गए, जिनके बारे में कहानी आती है। आप सरयू ब्राह्मण थे और 14 साल की उम्र में बैराग लेकर के आप कृष्ण के भक्त थे। बैराग लेके मथुरा वृंदावन में झोपड़ी बना के वही भजन करते।
about Sant Surdas. He was a great saint in the northern parts of India. At the early age of 14, he renounced the world and he went to Mathura. There he was devoted to Lord Krishna. कृष्ण आराधना उनकी भक्ति बहुत अच्छी थी, माने प्रेम और प्यार से भरा हुआ था। और क्या करते थे, भिक्षा यापन करके एक टाइम के लिए जितना चाहिए उतना मांग के ला के खा के बना के और भजन करना और जो है कि ध्यान में बैठना। So he used to collect alms for a one-day meal, and then he would cook or eat that meal and then do the devotion and sit for meditation. पहले जमानों में साधु महात्मा मानते थे जो जंगलों में और कहीं गांव से दूर कोई मंदिर में रहते थे, मान के अपना गुजारा करते थे और भक्ति करते थे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिनके अंदर मालिक से मिलने की जरूरत है, प्रेम है, वो लोग उतना ही मानते थे एक टाइम के लिए जितना जरूरी है। एक घर या दो घर में पूरा हो जाए वापस लौटा। Earlier Mahatmas would ask for alms for their meals. They would stay in the jungles or stay in some temples and they would do their devotion there. And they would go and ask for alms and ask for some food, maybe from one house or two houses at best. And when they got enough meal for a day, they would go back to their place. जो करते हैं वो बना के खा के थोड़ा रेस्ट लेके ध्यान बैठ जाते और रात दिन भक्ति से जुड़े रहते। तो जिनका वो खाते थे उनका भी भला होता था, क्योंकि भजन करते थे, ध्यान बैठते थे। अगर नहीं हम करते हैं भजन सुमरन तो वो कर्म अपने ऊपर आते हैं। So they would take that enough alms for just one meal and then they would go back, take some rest, have that meal and then do devotion. So whatever benefit of that devotion also goes to the people who have given that donation to them. If that devotion is not done, that meditation is not done and simply alms are asked and we accept from people free food, then we are building up our karmas and that has to be paid back. तो ऐसे साल डेढ़ साल हो गया था और जो भक्ति पक्की थी, तो एक दिन जो है भिक्षा मांगने के लिए गांव की तरफ गए और एक सुंदर कन्या जो 13-14 साल की और वो लाके के डोली में आटा और चावल डाला। So once, so he would do good meditation. So once it happened that he went for alms to a village and a beautiful, nice girl, she came and gave him alms. He put some wheat flour and other things in his bag. और इन्होंने इनकी भी उम्र कच्ची थी और बड़े ध्यान से देखा और वही मूर्त मन में बस गई। And he was also quite young and this girl, she gave him alms. So he also felt, he also had that image of that girl, and when he sat for meditation, he was imagining her. तो आके आके रेत लेके और जब भजन सुमरन बैठते हैं तो वही सूरत आती है। फिर थोड़ा घूम घाम के आते हैं, फिर भजन में बैठते हैं, फिर वही मूर्ति आती है। परेशान हो गए, बोले कि ये इसका ही गुण है, देखने के कारण से आज मेरे इष्ट देव से मैं दूर हुआ। तो गुस्सा आ गया और गए बाजार से 2 पूजा लेके और लाके और दोनों आँख निकाल के फेंक दिया, अपने घर पे आके दोनों आँख निकाल के फेंक दिया। तब से सूझा हो गया। So when he sat for meditation that day, the image of that girl kept coming in his mind
again when he got up and tried to do meditation again that image of that girl came, and this annoyed him a lot because that was keeping him away from his deity, and he got angry. He went to the market and got two sharp objects, and with those he pricked his eyes and removed his eyes. From then onwards, his name was Surdas. तो इस तरह से वो सूरदास बन गए, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची थी। तो कहीं भी आगे कोई पुराना कुआं, झाड़ जंकाड़ी या तो गांव बिच्छू जानवर होते या तो रास्ता भूल जाते, तो कृष्ण 5 साल की 6 साल का लड़का के रूप में आके हाथ पकड़ के उनको रास्ते पे पहुंच जाते। So he had taken out his eyes because it was because of those eyes that he was deprived of seeing his deity. And thereafter, once his eyes were removed, he could not see. But whenever he would walk, and if there were thorns on the way, or if there was some ditch on the way, then Lord Krishna would come in the form of a 5-year-old boy and handhold Surdas and help him walk safely. तो इस तरह से बार बार जब कभी भी रास्ता बोलते तो कृष्ण प्रकट होकर बालक के रूप में आके उनकी मदद करते। तो मतलब सोचा कौन है कि ऐसे संकट में आके और मुझे रास्ता बताता है, देखना चाहिए। तो उन्होंने एक दिन कृष्ण का हाथ जोड़ के पकड़ लिया। So whenever he would walk or lose his way, Krishna would come in the form of a small child and would handhold Surdas and walk him safely. So Surdas was wondering as to who helps him like this every time. Whenever he is facing some difficulty on the path, someone handholds him, some small child handholds him. So once when Krishna appeared and he was holding his hand to walk, take him safely, Surdas held on to that hand very firmly. तो जो है हाथ पकड़ लिया, कहते बताओ तो कौन है? तो कहते मैं तुम्हारा सेवक हूँ। कहते नहीं तो सच बता तुम कौन हो? तो इतने में बोले पीछे बगैर छोड़ेंगे नहीं और हाथ छुड़ा के भाग गए। So then when he held the hand firmly, he asked that boy to tell as to who he really was, because he was helping him every time. So that boy said that I am your sevak, I am there to help you. So Surdas said, no, nothing doing, you tell me the truth, who are you exactly? So then that boy somehow freed himself and ran away. तो सूरदास कहता है अच्छा तुम हाथ छुड़ा के तो जाते हो, लेकिन मेरे दिल से जब तुम जाओगे मेरे हृदय से तो मैं तुम्हें मरद में काम दूंगा। तो मैं मरद माने बहादुर। Okay, so then when he ran away like that, Surdas said that if you have freed your hand from me and you have run away, but if you are able to run like that from my heart, then I will show you how manly I am. क्योंकि उनके भक्ति से कृष्ण अंदर प्रकट थे, बाहर से तो चले जाएंगे लेकिन अंदर से कहाँ जाएंगे? So that way he had manifested Lord Krishna within, and even though outwardly Krishna could run away, but inside Lord Krishna had to be there as he was manifested within. तो कुछ आगे जाके उनकी तीसरी आंख खुल गई थी भक्ति से, क्योंकि सच्ची भक्ति थी। तो बाद में उगरदास संत महात्मा मिले और जिन्होंने सतनाम दिया और ये भी संत महात्मा हो गए। So that way with his devotion, he had opened his third eye because his devotion was very pure. And later in his life he met Ugradas, Saint Ugradas, who initiated him into Sattva. तो बाद में वो सतपुरुष माने के पहले ही कमाई थी और सतलोक सचखंड पहुंची, उसका बयान आगे वाणी में किया है उन्होंने। So that he was anyways a very pious and a very devoted soul. So once he came on this path, he went to Sachkhand Satlok, and there are references in his Bani about the path.
तो वही आप इशारा देते हैं, चौड़ मन हर विमुखन कोसन, ये मन तो हर एक से जो विमुख हैं, जो नास्तिक हैं, जो भक्ति से दूर हैं, तो उनका साथ मत करो. So he says that he addresses his mind and says that you do not seek company and do not keep company of those who are not devoted to God Almighty. कहते ये दुनियादार लोग हैं, खुद तो भक्ति करते नहीं, दूसरे को भक्ति से दूर करने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी गलत बातें आपके दिमाग में भर के आपको भक्ति से दूर करें. Because these worldly people, they are themselves not devoted to God Almighty, and they also distract you, and they take you away from this path. They put all kinds of things in your mind and distract you also. क्योंकि भगत को इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, बाल बच्चे में रहते हैं, गांव देश में रहते हैं, हर तरह के लोगों से पल्ला पड़ता है, तो हमें ऐसे लोगों से जागृत रहना चाहिए. A devotee has to be always careful and he has to be cautious in this regard, because he is staying in this world and with his family, and he meets all kinds of people. So he has to be very mindful of such people who will get him adrift. Chari man hari bimukan kan ko sanga, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है, परत भजन में भंग. तो वही करते हैं जिनके साथ में जाने से और जिसके संग से हमारे अंदर कुबुद्धि माने बुरे विचार पैदा होते हैं, और हमारे भजन बंदगी में विघ्न पैदा होता है, माने फिर हमारा भजन बनता नहीं. जो कहते हैं ऐसे से हमेशा दूर रहे. So he says that you stay away from such people who whose thoughts or whose company causes an impediment in your devotion, and who take you away from the path of devotion. You stay away from such people. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कुछ किताबें पढ़ करके उनके अंदर अहंकार आ जाता है और वाद विवाद करते घूमते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका कोई न भक्ति किया है, न भक्ति का अनुभव है, न और कोई अनुभव उनके अंदर, खाली ग्रंथों के आधार पर लड़ाई झगड़ा करते घूमते हैं. There are so many people, the supposedly learned ones, who have read the scriptures, and they only end up doing arguments about spirituality and about what is written in the scriptures. They have never done their own devotion, they have never meditated, and so such kind of people get us away. ऐसे ही बनारस में कबीर साहब के समय में सर्वाजित पंडित, अपना नाम सर्वाजित रखा था, क्योंकि 4 वेद 6 7 18 पुराण का पठन करके उसका उसको अनुभव ज्ञान था, और कैसे भी महात्मा को हरा के और सर्वाजित नाम रखे बैठा. That way there was this Pandit, he called himself Sarvajit, or the winner of all, and he had read all the scriptures, the Puranas, the 4 Vedas, and he claimed to be expert in all of these. हाँ, तो बाद में वो सब लोग सर्वाजित पंडित बोलकर बुलाते थे, उसको बड़ी खुशी होती थी 4 आदमी. तो माँ जो है मामली नाम से बुलाती थी, तो इसको बड़ा दुख होता था 4 आदमी माँ मामली नाम से बुलावे. तो एक दिन माँ से पूछता है कि माँ, सब लोग मुझे सर्वाजित पंडित कहते हैं, तो मामली नाम से क्यों बुलाते हैं? So everyone would call him Sarvajit Pandit, and he used to feel elated when 4 people would call him that, and everyone felt that he is an expert, and they addressed him like that. But his mother always called him by his real name, and he used to get very annoyed that his mother is not addressing him as Sarvajit Pandit. So he would often tell her that, why don't you call me Sarvajit Pandit also? Everyone else is calling me so. तो बाद में
माँ कहती है कि बेटा तूने जरूर सबको जीता होगा, लेकिन एक जुलाहा कबीर है, अभी छोटा उम्र है, तो एक उनको जीत के आ जा तो मैं तेरे को सर्वजीत के नाम से पुकारा। So when he kept arguing like this with her, she said that okay, I will call you Sarvajit Pandit, but then there is this young weaver in Varanasi, Kabir. His name is Kabir, and if you go and show that you have more knowledge than him and you defeat him in your debate, then I will also call you Sarvajit Pandit. तो सर्वजीत पंडित बोला, अरे वो जुलाई को उसको क्या पता है, मैं अभी जाके उसे जीत के साइन करा के लेके आता हूँ। तो अपने एक बैल के ऊपर दोनों तरफ सारा किताबें भर लिया, बैल के पीठ पे, और एक अपने शिष्य के साथ में बैल का रस्सी पकड़ा दिया, आगे आगे आप, पीछे पीछे बैल। क्यों अगर नहीं मानेंगे तो किताब खोल के उदाहरण दिखाने के लिए वो किताब लेके चलना। So Sarvajit told his mother that there is no big deal. He is just a weaver. I will go and immediately defeat him in a debate, and I will come back. I will bring in writing that I have won the debate with him, and then after that you have to call me Sarvajit Pandit. So she said okay. Then he got his ox and he laid all the scriptures and all the other holy books on that, and he took that ox with him because in case he had to prove something, then it would be written in these books, so he could easily prove it to that weaver. तो लेके चले, कबीर साहब का पता पूछते 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 कबीर के घर के सामने पहुंचे, तो कबीर साहब के दरवाजे पे वो लड़की खड़ी थी, उनकी लड़की कमाली खड़ी थी। तो जाके ये महात्मा पूछते हैं, पंडित जी कि ये कबीर का घर यही है? तो वो हंस के कहते, अरे महाराज, कबीर का घर शिखर पे, जहाँ सिलसिली ना गैल, पैर न टिके पिपलका का पंडित ला दे बैल। जैसे कबीर का घर 7 आकाश के ऊपर है, और वहाँ जो है चींटी को भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और आप बैल मोड़ करके कबीर के घर जाने के लिए चले। So he carried that ox laden with all the books, and he searched for Kabir's house. And then after asking for the address, he finally reached the house of Kabir Sahib. And there Kamali, his daughter, opened the door, and he asked if that was the house of Kabir. So she said that the house of Kabir is in the seventh sky. It is not here, and there even an ant cannot place its feet, and you are bringing an ox with all the books. तो बाद में तीर का सिर नीचे झुक गया, एक लड़की को भी जवाब देने को नहीं होता। तो बाद में वो लड़की भाग के गई, कबीर साहब से बोला, महाराज आपसे मिलने के लिए एक पंडित जी आए हुए हैं। तो कबीर साहब के अंदर चिंता न पड़ता थी, भाग के गए, पंडित जी को बड़े आदर से 5 लोटा पानी दिया, पैर धोया, और ला के अंदर आसन डाल के पंडित को बिठाया। So he felt very humbled by what she said, because he could not give her an answer to this. Then she went in and told Kabir Sahib that a Pandit has come to meet him. So Kabir Sahib, with his humility, came out and he ushered that Pandit inside, washed his feet with water, and gave him extended all the courtesies and asked him to sit. फिर पंडित जी को बिठा के उनका आदर सत्कार करके पूछते हैं कि महाराज आपके आने का क्या कारण? And he asked him as to what was the reason for his visit. तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने ऐसा कहा है, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। So he told Kabir Sahib that my mother has told me that I should come here and debate spirituality with you. तो कबीर साहब कहते हैं, महाराज आप पढ़े लिखे पंडित हैं, और मैं एक अज्ञानी जुलाहा कपड़ा बुन के अपना गुजारा करता हूँ, अज्ञानी के साथ आप जैसे लोग बहस करें तो क्या
आपको शोभा देता है। So Kabir Sahib said that, "Oh Pandit, you are such a learned person. You are so literate and you are an expert, and I am an illiterate weaver. So it doesn't befit you to come and do a debate with an illiterate person like me." तो कहते फिर लिख के दो कि सर्वजित जीता और कबीर हार गया, आप साइन करो। तो कहते महाराज आप ही लिख लो। तो उन्होंने लिखा अच्छी पढ़ के, सर्वजित जीता कबीर हारा। तो कबीर ने साइन कर दिया। So then Sarvajit said that, okay, if that is the case, then you write and say that Sarvajit has won, you have lost the debate. So he said, okay, no problem, but you only write it. You can write whatever you want and I'll sign it. So Sarvajit then carefully wrote out that Sarvajit has won the debate and Kabir has lost the debate. And he gave it to sign to Kabir Sahib. और लाके वो पेपर माँ के सामने फेंक दिया उनके चरणों में कि ले पढ़। तो माँ कहती है बेटा मैं अनपढ़ हूँ, मुझे तो काला अक्षर पढ़ बराबर मुझे कुछ पता नहीं है, अगर तू पढ़ के सुना दे। So Kabir Sahib signed that paper and Sarvajit returned and threw that paper in front of his mother. He said, okay, now read it, see, read for yourself. So she said that I don't read, I do not know how to read, so why don't you only read it for me? तो सर्वजित पढ़ने लगा तो उल्टा हो गया। कबीर साहब जी का ऊपर जो सर्वजित लिखा था ना, सर्वजित हारा और कबीर जीता हो गया। तो आँख पढ़ के देखता है कि मैंने ही लिखा, अरे उल्टा कैसा हो गया? ये कोई मंत्र तंत्र जानता होगा जुला। So when he took that letter to read it, he read that what was written there was Sarvajit has lost the debate and Kabir has won the debate. So he could not believe his eyes because he had read it so carefully and it was his own handwriting. So he could not believe it. He felt that maybe Kabir has some mantras or tantras and he's used that to change that. तो फिर वहाँ से गया, अच्छा बोलोगे मैं जाके आता हूँ, फिर गया और फिर कबीर साहब बोलते महाराज फिर आने का क्या कारण हो गया? नहीं लिखने में गलती हो गई। तो बोला अच्छा सुधार दो। तो फिर लिखा अच्छा तरह से विचार करके कि कबीर हारा और सर्वजित जीता, 10 दफा पढ़ा और फिर साइन लिया। So then he said, I think I made some mistake in the writing, I'll go back. So he went back to Kabir Sahib. Again Kabir Sahib extended the courtesies, asked him why he returned. So he said, I think there is some slight mistake in the letter. So he said, no problem, you correct it and I will sign it again. So he wrote again carefully and he read it 10 times. So he wrote again, Sarvajit has won the debate, Kabir has lost the debate. And he read it again and again to make sure that he's writing it properly. फिर घर पे आके माँ के सामने पढ़ने लगा, फिर उल्टा हो गया कि सर्वजित हारा और कबीर जीता। तो आँख फाड़ के देखता है कि मैंने ही लिखा, अभी तो कोई गलती नहीं किया, 10 दफा पढ़ा। तो माँ कहती बेटा तेरे समझ नहीं आएगा, तेरे समझ के बाहर का चीज है, वो महात्मा है, उनके शरण में जा। तब जाके उसकी आँख खुली और जाके कबीर साहब को शरण चला गया। So when he brought it again and read out to his mother, the same thing had happened. He had written Kabir has won the debate and Sarvajit has lost it. And he could not believe it because 10 times he had read it earlier and he had corrected it. So he could not believe it. But his mother, she told him that this is beyond your comprehension. Kabir is a Mahatma. So you should bow down to him and go and surrender to the master. So after that his eyes opened and Sarvajit went to Kabir Sahib and made him his master. तो माँ ने कहा था कि बेटा पढ़ने पढ़ाने से मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति साधन करके अंदर जाने से मुक्ति मिलेगी। वो महात्मा है उसके पास जा, तब जाके कबीर के शरण चले। His mother had told him that by reading and just
reading the scriptures and all these books, you are not going to get salvation. That you will get only in the company of a master when you do that devotion. And therefore, following her instruction, he had gone to Kabir Sahib and made him his guru. ग्रंथ सब अच्छे हैं, सब अच्छा लिखा है, लेकिन जिन्होंने ग्रंथ लिखा है वो मेहनत किए, अंदर गए और उसका अनुभव लेकर के उन्होंने ग्रंथ लिखा है। और ऐसे ही पढ़ने पढ़ाने से थोड़ी किसी की मुक्ति होती है। जैसे हम कोई इंजीनियरिंग प्लान बनाया, हाल बनाने का है, इधर खिड़की इधर दरवाजा सब इंजीनियरिंग प्लान में लिख दिया, अब उसको 6 महीना पढ़ते बैठेंगे तो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। So, scripts, there is nothing wrong with the holy books and scriptures. Whatever is written there is good, and it is the experience of someone who has gone within, who has written that in these scriptures. So, for us, we have to actually go within, we have to bring it into practice and follow that and go within. It is like if someone writes as an engineer, he writes that walls of a building should be like this, windows should be like this, and ceiling should be like this. And someone starts reading that, and he reads it for 6 months. Is the building going to be ready? तो पढ़ने से काम नहीं चलता है, उसके ऊपर अमल करके उसको बनाने से कितना मेहनत करके बनाना, फिर जाके बिल्डिंग तैयार होता है। So therefore, by just reading that design, the building is not going to get automatically constructed. One has to actually construct the building by following those designs, and then only after that hard work of erecting that building, one can actually get to stay in that building. जिनके संग कुबूती उपजती है, परत भजन में भंग, कहाँ होत पाए पाम कराए, विष नहीं तजत भुजंग। तो कहते भाई जिसके संग में हमारे भजन में, आपके भजन में भंग पड़े, नुकसान हुए, भजन में आप नहीं बैठ पाए, तो कहते ऐसे का साथ छोड़ दो, क्योंकि वो उससे आपका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं ये ऐसा ही ऐसा, जैसे एक सांप को आप दूध पिलाओ, दूध अमृत है, लेकिन वो सांप को जहर ही पड़ता है। So he says that if you see that in the company of someone, your devotion is not getting done, you are getting distracted and you are not able to do your devotion, then you should desist from that company, you should avoid that company. It is like keeping a snake and feeding that snake milk every day. By feeding the snake milk, it is not going to change, it will continue to have the venom and it will bite sometime. तो कहते हैं इसी तरह से दूसरों को आप कितना अच्छी अच्छी बात बताओ और उनको कितना भी सत्संग सुनाओ, लेकिन उनका जो है कि वो अज्ञानी बढ़ते जाता है और वो समझ लेने के लिए तैयार नहीं रहते, उनका जहर ही बढ़ता है। So same way, if there is someone whom you are trying to explain again and again and talk about this, but they are not able to understand it, they are not able to bring it or accept it in their mind, they will continue to carry their own inhibitions, that those will not go. And how much ever you try to explain or how much ever you try to talk about this. तो कहते हैं ऐसे लोगों से एक भक्त को हमेशा दूर रहना चाहिए। So from such people, one devotee has to always stay away. क्योंकि मुझे जब पहले सत्संग मिला बॉम्बे में 71 में, जब मुझे पहले सत्संग मिला तो मैंने अच्छे अच्छे लोगों का संगत किया बॉम्बे में, जो कि साधन में कुछ आगे गए थे। मैं छोड़ के ऐसे लोगों के पास जाके बैठता था और उसका ही परिणाम हुआ है कि आज हमें महात्मा सदगुरु मिले और आज हमें स्टेज पे आए। In 1971, when I first got to hear the satsang, after that I always chose carefully the company of devotees who were very devoted, and I tried to keep that company
And it is because of that company only that I have been able to get the grace of Sadguru and come to this place. तो संगत का अपने मन पे बहुत बड़ा असर होता है। अगर हम एक कमाई वाले लोगों के पास जाते हैं जो भजन सुमरन में प्रेम है और रोजाना भजन सुमरन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो वो लोगों के पास जाने से आपके अंदर भी वो भक्ति का रंग बढ़ता है। So when you keep company of such devotees who are themselves devoted and who are spending a lot of time in their devotion, then you will also be encouraged or motivated to do your devotion. हमारे पास एक प्रेमी आया, वो आंध्रा का ही था और वो मच्छी मार्केट में बॉम्बे में क्राफ्ट मार्केट में काम करता, टोकरी उठाने का। वो मच्छी मार्केट का क्या काम क्या है, वो टोकरी बड़ी दुर्गंध रहती है उसमें और उसको पैसा ज्यादा मिलता है धोने वाले को, तो उसमें काम करता था, अच्छा था, तंदुरुस्त आंध्र का। तो उधर कर करके वो थक गया, थक के गाँव आया था, तो उसको मालूम हुआ कि इधर आंध्र इधर बुदेला में आश्रम है बोल के, वो इधर तो मेरे पास आया, आगे कहता है कि देखो, और वो क्या किया था, कुछ ये तमाशा दिखाने वाले ना रोड पे, उनके साथ कुछ तमाशा दिखाने का भी बिजनेस दिखाता है, ओवर का पैसा कमाने का। तो वो मेरे पास आके बोलता है, महाराज हम भी साधु बनना चाहते हैं। हम बोला ठीक है, क्यों आपको बाल बच्चे हैं? कहते हाँ बाल बच्चा सब है। तो फिर कहाँ काम करते थे? हम बॉम्बे में काम करते हैं मच्छी मार्केट में। तो क्यों छोड़ रहे? अरे बहुत तकलीफ होता है, वो मच्छी का टोकरी ठोक के सब सारा शरीर दुर्गंध से भर जाता है, वो पानी गिरते रहता है ना, तो क्या करेगा, अच्छा नहीं लगता है। बोले अच्छा है, फिर सन्यासी बनोगे तो बच्चे लोग को कौन देखेगा? बोलते अरे पैसा कमाने के लिए सन्यासी बनने का, वो बाल बच्चा को और भी आगे ले जाने के लिए। तो हम बोला क्या? बोला ऐसा कुछ युक्ति बताओ कि पैसा आए। हम बोला ऐसा युक्ति हमारे पास नहीं है, तो तुम और भी कहीं जाके देखो। तो वो गया और कहाँ जाके फिर लास्ट में देखो इधर आके कर्नाटका में वृद्धा आश्रम है ना, रास्ते सिंह हमारे रास्ते, अब उधर वो महात्मा बन के बैठ गया, पीला कपड़ा पहन के, और बोलता मैं हिमालय में इतना दिन बैठा था, देर बार तो मेरे सामने से आके जाते थे, ऐसा वैसा तो गप्पा मारने लगे। तो लोग मानते हैं कि, और बाद में साईं बाबा जैसा बाल कटवा लिया तो ऐसा जुट पड़ा और पैसा जमा करने लगा, मिनिस्टर लोग को अपने अंदर लेने का, बड़े बड़े एमएलए एमपी को अंदर लेने का, पैसा कमाने का, कि साईं बाबा का मंदिर बनाने का, उसके झूठ बोल के वहाँ जमीन खरीदने लग गया। पैसा देते थे लोग, मिनिस्टर लोग से भी पहचान किया, ऐसा 5-6 साल अच्छा चला। तो बाद में क्या हो गया, उसके पीछे कुछ लग गई और वो पकड़ा गया, पकड़ा जेल। वो करीब करोड़ों रुपए कमाया उसने मंत्री से झूठ बोल के, ऐसा लोग काला कमाई रहता है, दे देते हैं। अब वो साईं बाबा को मंदिर में लगाएंगे करेंगे, जाके जमीन लेता था उधर गाँव में, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना दी, और बाद में सब मालूम होने से बाद में उसको जेल में डाल दिया इधर बेंगलुरु में, और काफी दिन जेल में रहा। फिर उसको ये हुआ, अभी गाँव में रहता है, खेती करता है। तो ऐसे लोग भी रहते हैं। I met a person in Andhra. This person was earlier working in the Mumbai fish market. It's near Crawford Market, and it is a large fish market. And he was quite a strong person physically, and he would carry these baskets of fish when they would come fresh. And because the fish stinks, that water which drips, and there is a lot of stink when you carry it, those people are paid more for carrying carrying this weight. So he used to work like that. Then also he had some business where they did these open kind of performances on the road, streets, and he had some share in that business also.
So once he came to meet me in the ashram in Andhra, and he said, I want to become a sannyasi. And I asked him as to whether he was married and he had children. So he said, yes, I have children and I have a family. Then I asked him what he is doing. So he explained to me that he carries these baskets of fish in Mumbai and he's got that business, etc. So I asked him why he wants to leave all that. So he told me that all this, there is a dirty stink in carrying all that basket, it is all hard work. So I don't want to do that. Instead, I want to become a sannyasi. Then I said that if you become a sannyasi, who will look after your family? He said, no, I don't mean that I'm actually going to be a sannyasi. I just want that as a business. I want to earn money. And I will then take care of the livelihood of my family, but in a better way. So then I told him that, look, I cannot help you with that. I don't have those kind of tricks. So I can't help like that. So after that, he continued to scout around in different places. He went and he tried to do all that. And near Chikbellapur on the outskirts of Bangalore in Karnataka, there he finally managed to set up a place. And he started wearing orange clothes and he started growing hair like Sai Baba. And once he did that, then there are always people who want to believe and they go to him. So like that, some ministers also came to him. Then they have unaccounted monies. So he would keep telling them that I want to construct a Sai Baba temple. And he would take large donations. And those were unaccounted monies. So he would easily get large amounts. So like that, he would take that money and then buy land elsewhere. And this continued. And then after about 3 or 4 years, the crime branch got behind him and they arrested him. So he was in the jail for a long time where he had taken these monies and siphoned off all of these monies. So now he is released and he is back in his village and he is doing farming there. So you do meet all kinds of people like these also. तो वो इधर भी आया था, चन्नसंद्रा में फार्मर प्रोग्राम में 2 बार आया था, वो साईं बाबा बन के तो बोलता है कि ये लोग को हमारे पास लेके आओ वृद्धाश्रम में। उसको आश्रम बना के बैठा था तो हम बोला नहीं, ये लोग ध्यान भजन के लिए आते हैं, तुम्हारे बारे में को आने की जरूरत नहीं। बोलते अरे मैं इनको बहुत कुछ चमत्कार बताऊंगा, ऐसा करूंगा। वो क्या करता था, ऐसा करके किसी को अंगूठा दे देना, आप किसी को वो सब थोड़ा सीख लिया था उसने। तो वो चमत्कार बना के पैसा कमाया उसने, लोगों को धोखा दिया। He had even come to this Channasandra Ashram a couple of times. And he used to tell me that you get these foreigners who are visiting you, why don't you ask them to come to visit my place also? And I have this place where I have accommodation for the elderly people, so they can come to me. And he had learned these small tricks where he just takes some out of thin air, he gets a ring and he gives a ring to somebody, or he gives some ash to somebody. All these kind of small tricks he had learned from somewhere. So I told him that no, these people come here for meditation and they are not going to be coming for any care like that, or they don't need to come to your place. दूसरे से वो नहीं मिलना चाहते और लोग जाएंगे भी नहीं कोई, मैं ये लोग ध्यान के लिए आए तब जाके चुप हो गए। So I told them that they won't be interested in going elsewhere also, they only come for meditation. So then he became quiet and he stopped asking. कहावत पे पावत राए, विष नहीं तजत भुजंग, कागही कहाँ कपूर चुगवाए, स्वान नवाए गंग। तो वही दूरदास जी करते हैं कि कौवे को आप जितना भी कर्पूर खिलाओ तो उसके
जो अच्छा रहे, सुगंध आवे, लेकिन वो फिर थोड़े टाइम में जाके गंदगी में मुंह मारे। Sudas he says that to the crow, how much ever camphor you give, it may smell nice in his beak temporarily, but finally he is going to go and eat something filthy. और कहते हैं ऐसे कुत्ते को चाहे कितना बारी गंगा स्नान कराओ, लेकिन वो फिर बाहर निकल के मट्टी में लपेटेगा ही। So like that he says that for a dog, you may give him as many, you may bathe him as many times in the Ganges, but when he comes out, he is going to roll in the mud only. तो कहते हैं कि ये लोग अपना गुण छोड़ने वाले नहीं है। So he says that like that, these people are not going to leave their characteristics. काग काग पुर चुगवाए, स्वान नवाए गंग, खर को कार गजाले पन, मरकट भूषण अंग। तो ये सूरदास जी कहते हैं, गधे को आप कितना भी चंदन का लेप करो कि इसके भी शरीर से सुगंध आए, तो वो फिर भी जाके वो मट्टी में बैठेगा, उसका भी वही गुण है। So he says that for a donkey or an ass, you can cover him with sandalwood, with a paste of sandalwood as many times, but he is also going to then lie down in that mud. और कहते हैं कि बंदर को कितना कीमती हार पहनाओ, लेकिन उसका कीमत उसको कुछ नहीं है, वो काट के टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देगा। Like that, however costly a necklace if you give to a monkey, he is going to break that necklace and throw it all over the place. खर को कार गजाले पन, मरकट भूषण अंग, गज को कहा नवाए सरिता, बहुरी धरे के ही चंग। तो कहते हैं ऐसे हाथी को चाहे कितना भी तालाब में मर के धो के बाहर लेके आओ, फिर वो अपने सूर से मट्टी उठा के अपने ऊपर डालेगा ही। तो इनका स्वभाव ही ऐसा है, वो स्वभाव बदलता नहीं। So he says that how much ever you bathe an elephant in a pond and you clean it with all kinds of soaps, but when the elephant comes out, it is going to take mud in its trunk and going to spray itself with mud. तो कहते हैं इनका स्वभाव ही ऐसा है, आप कितने अच्छी अच्छी बातों बताओ, ये अपना अवगुण छोड़ने वाले नहीं है। So like that, how much ever you try to convince someone, they will not leave their characteristic. तो इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे भजन में भी विघ्न डालेंगे, भजन बनने नहीं देंगे। So therefore Sudas says that you leave the company of such people because they will be an impediment in your devotion. गज को कहा नवाए सरिता, बहुरी धरे के ही चंग, पावन पतित बाल नहीं वेदत, रीत करत निशंग। तो वही कहते हैं कि जिस तरह से पत्थर में बाण नहीं घुसता है, ऐसे दुर्जनों के अंदर ये सत्वाक्य प्रवेश नहीं कर पाते। वो हमेशा झूठ से प्रेम करते हैं, सत्य वाक्य से दूरी बनाए रखते हैं। So he says that just like an arrow does not pierce a stone, like that whatever you talk to them about the path, that is not going to penetrate or go or get assimilated by them. तो ऐसे दुर्जन लोगों को अवगुण ही प्यारा लगता है, सगुण या अच्छी बातें उनको प्यारी नहीं लगती। So he says that such people will like only to talk about other things. They will not like to listen to spirituality and good things to talk about. ये दूसरों के निंदा चुगली में लगे रहते हैं, दूसरों के कर्म अपने ऊपर लेते रहते हैं, और इनको पता नहीं किस तरह से कितने कर्म
So these people like to talk ill about others, and for them they will, whatever we say, whatever good things we say, will just roll over. पावन पतित बान नहीं भेदत, रीत करत निशंग, सूरदास खलकारी का कमरी, चढ़तन दूजो रंग। तो इस सूरदास लास्ट में कहते हैं कि जिस तरह से काले कमल पे रंग नहीं चढ़ता है, ऐसा ये दुष्ट लोग का मन काला होता है और उस पे सत्यवाद का रंग नहीं चढ़ता। So Surdas ji at the end of this Bani says that it's just like a black colored blanket which will not get or imbibe any other color. Like that, in their hearts, they will not accept any good talk of any spirituality. They will continue to remain dark. पावन पतित बान नहीं भेदत, रीत करत निशंग, सूरदास खलकारी कामरी, चढ़तन दूजो रंग। मुरली धूनी गाजा, सुर सुरति सज सर साजा। और सूरदास जी कहते हैं मेरे अंदर वो मुरली की आवाज, कहते हैं जब इनकी रूह और गुफा में पहुंची और वहाँ मुरली की आवाज सुना तो सूरदास की रूह मस्त हो गई। तो कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत खुशी हुई कि मैं अपने घर पहुंच रही हूँ। Surdas ji in this other part of the Bani says that when he reached Bhavan Gufa, he heard these flutes, he heard the sound of flute, and it is so intoxicating. He said that I was so happy that I am nearing my home now. मुरली धुनि गाजा, सुर सुरति सर साजा, निरखत कवल नैनन बहु पर, शब्द अनहद बाजा। जब कहते हैं कि अब नीचे से बयान करते हैं कि जब हमारी रूह सीमेंट के नीचे से चढ़ाई किया तो कहते हैं अनाद नाथ प्रकट हो गया और वहाँ पे जो मालिक था उसका मुझे दर्शन मिला। So now he says that when his soul withdrew from his body, he manifested that sound current and he got to see the Lord of that plane. निरखत कवल नैनन बहु पर, शब्द अनहद बाजा, सुनी धुनि मैल मुकर मन माजा, पाया अमीर सजाजा। ये सब सूरदास अंदर का बयान करते हैं कि जब हमारी रूह अनाथनाथ से जाके मिली, ब्रह्मदास में जाके मिली, तो हमारे कहते मन निर्मल हो गए। जो करोड़ों जन्मों की मैल चढ़ी थी वो सब भूल गई। So Surdas he says that when my soul went and got connected to the Anahad, to the holy sound current, then so many karmas, the filth on my mind, that all got cleansed. कोई भी जब अंदर जाता है आठवें चक्र में और अनाथनाथ प्रकट होता है तो मन जो करोड़ों जन्मों की मैल मन पे चढ़ी है वो धुल जाती है और मन एकदम निर्मल शीशे जैसा निर्मल हो जाता है। So whenever anyone goes in the eighth plane and manifests that holy sound current, then the mind gets pure when it gets connected to that sound current. And for crores of lives, previous lives, whatever filth it has carried, all that filth gets washed off and it becomes very clean and transparent. तो मन जाके
शब्द में समा जाता है, निर्मल होके शब्द को छोड़ के बाहर आना ही नहीं चाहता। And once it becomes transparent and clean, it goes and merges with that holy sound current. And when it does that, when it merges with the sound current, it does not want to come outside. तो कहते हैं कि उस समय उसको खोजी हो जाती है कि मैं जो है ब्रह्म से आया हूँ, मैं इंद्रिय और शरीर में, और मन अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और दुनिया को लात मार देते मन। When it gets connected with the holy sound current, the mind realizes that it is an essence of Brahma, and it is not this body or these vices or these indriyas. It realizes that it is of a higher order. सुनी दुनी मैलम कर मन माजा, पाया अमीर सजाजा, सूरत संद सोत सोद सत काजा, लकी लकी शब्द समाजा। इस तरह से शब्द को एक शब्द से दूसरा, दूसरे से तीसरा, शब्द से जुड़ के आत्मा निर्मल होती, अपने घर पहुंचती। So he says that like this, the sound currents are connected, and from one sound current to the other, the soul goes back to its true home. तो कहते हैं कि मन जो है जाके ब्रह्म में समा जाता है, ब्रह्म के ऊपर मन नहीं जा सकता, आत्मा नंगी हो जाती है और गुरु के साथ आत्मा अकेली पार ब्रह्म में जाती है। So when they transcend within on the sound current, the mind cannot go beyond Brahma. So the mind stays back at Brahma. Thereafter, the soul, with the company of its master, goes to Par Brahma. सुरती संद सोद सत तकाजा, लकी लकी सबद समाजा, घट घट कुंज पुंज जहाँ छाजा, पिंड ब्रह्मांड विराजा। तो कहते हैं कि इस तरह से अंदर में एक मंडल से एक मंडल बहुत सुंदर देश है, तो जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, वही सतलोक सचखंड में भी है। तो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी आत्मा एक एक जगह रहती है, जैसे यहाँ जीव रहते हैं तो ऊपर भी रहते हैं, जो भजन सुमरन करके वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो वो थोड़ा दिन वहाँ रहते हैं और फिर वहाँ से आगे जाते हैं जिनको सदगुरु मिला है। So the soul, when it goes within, just like we have people around us, just like in this physical world there are people around. Like that, there are worlds within, and at each of these inner planes there are worlds, and there are souls which stay there. They have done their meditations and they have gone in, and they are staying at different levels. So those are much more beautiful places than this. And the soul then goes through and experiences all of that when it goes within. तो कहते इन सब का आत्मा अनुभव करती है, इसको देख के खुश होती है कि एक मंडल से एक मंडल बहुत खूबसूरत है। The soul then for itself sees all these inner planes and enjoys the sight of all of these beautiful worlds within. घट घट कुंज पुंज जहाँ छाजा, पिंड ब्रह्मांड विराजा, फोड़ कास अलल पंच बाजा, उलटी के आप समाजा। तो ये कहते हैं कि संतों ने अलग भक्ति का उदाहरण दिया, ये संत मत के अलावा और कहीं भी ये उदाहरण नहीं मिलता, कोई ग्रंथ में नहीं मिले, खाली संतों ने दिया है। अलग भक्ति का मतलब आकाश का भक्ति, वो हमेशा रात दिन आकाश में रहता है और अंडा बच्चा भी उधर ही देता है, और जब वो अंडा वहां से नीचे चलता है गिरता है तो
हफ्ते में ही अंडा फटता है, बच्चा बाहर निकलता है, उसके पर आ जाते हैं, पैर आते हैं, और नीचे गिरने के पहले उसको समझ आ जाती है अरे ये मेरा दिल नहीं, और वो फिर ऊपर चले जाता है। उसको अलग पक्षी कहते हैं, आकाश पक्ष में रहने वाला पक्षी। So, Surdas ji gives the reference of Alhal Pakshi, Alhal Pakshi, that is the Alhal bird. This reference of this bird is only in Sanskrit. No, you will not find the reference of this bird in any other scriptures or any other holy books. This is a bird that stays in the skies only, and it does everything in the sky only. When it even lays an egg in the sky, that egg when it falls and it hatches, the young one comes out from that egg and it falls further down, but before it hits the ground it gets its wings and its legs and everything, and before it touches the ground it realizes that this is a different world, it doesn't belong in this world, and it flies back in the sky. तो कहते हैं ऐसे ही आत्मा जब पार ब्रह्म में पहुंचती है, निर्मल हो जाती है, तीनों शरीर के पर्दे से दूर हट जाती है, तो अलग पक्षी जैसे इसको ज्ञान होता है मेरा देश सतलोक सचखंड है, और वहां से वो शब्द के जरिए चढ़ाई करके अपने घर पहुंच जाते हैं। So when the soul reaches Sachkhand, it becomes like the Alhal Pakshi. It realizes that everything else is not its world, and on the holy sound current, it then goes further inside. तो निर्मल आत्मा वहाँ जाके निर्मल हो जाती है, उसको अपना ज्ञान होता है कि ये सब अंडपिंड ब्रह्मांड अपना नहीं है, सब लोग सचखंड अपना है, और लौट के वहाँ चली जाती है। So there the soul becomes very pure, and it realizes that it doesn't belong to this physical, astral, causal worlds, and it then goes further it goes to Sachkhand and further. उलटी के आपस माजा, ऐसे सुरती निरकिनियचर, कोटिन कृष्ण तहाला जा। तो वही आप सुरदास जी कहते हैं कि ऐसे ही अक्षर नियक्षर कहते हैं कि अंदर में जो अंदर जो कुछ ये है, जो नाद मुरली का हो रहा है, वो मुरली की आवाज के ऊपर कोट कृष्ण ला जाए, बाहर के कृष्ण की मुरली कोई काम की नहीं, उसके सामने कृष्ण भी, करोड़ों कृष्ण भी लग जाए माने। So Surdas ji says that when he hears the flute of the Bhavan Gufa, the flute is so intoxicating. He says that tens of millions of Krishnas, when they play their flute, it will be of no comparison to the kind of sound of the melodious sound of flute that we can hear in Bhavan Gufa. तो कहते हैं क्योंकि अब जब हम आगे गए तो वहाँ भी मुरली की आवाज बहुत सुरीली आवाज आती है, वो सुन के आत्मा मस्त हो जाता है। तो कहते हैं अरे यहाँ मुरली की आवाज जो है वो नीचे कृष्ण की मुरली से करोड़ों भाग अच्छा है, तो ऐसे मुरली की आवाज पे तो करोड़ों कृष्ण लग जाए मानता है। So when he went inside and he heard the sound of the flute in Bhavan Gufa, and the soul gets so intoxicated in that sound of the melodious sound of that flute, he feels that in the physical world also there was the flute of Krishna, and so Krishna will feel embarrassed by listening to the melody of this flute in Bhavan Gufa. ऐसे सुरती निरकिनियचर, कोटिन कृष्ण ताला जा। सूरदास सार लिख पाया, लखी लखी अलक काया। तो कहते इस तरह से सूरदास को सार माने सच का पता चला, और अंदर के सारे मंडलों को देख के बहुत
he says that Surdas has on the Sar Shabd gone back to God Almighty, he's gone back to Sachkhand, and it is very happy and that it has gone back. सूरदास सार लिख पाया लकी लकी अलग काया सतगुरु गमन गली गर पाया सिंध में बुंद समाया। फिर आप ये खुलासा करते हैं कि मैं सदगुरु की कृपा से हमें जो है कि आज सब लोग दर्शन पहुंच गया और परमात्मा में आत्मा ऐसे समा गई जैसे सिंधु में बिंदु, आत्मा बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। तो सिंधु में बिंदु किस तरह से समा जाता है फिर अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह से मेरी आत्मा परमात्मा में मिलके परमात्मा का रूप हो गया। So he acknowledges that because of his Sadguru, he is able to go back to Sachkhand. It is with his grace and teachings that he has gone back to Sachkhand. And now that he has gone to Sachkhand, he has merged with God Almighty like a drop merges in the ocean. Like that he has gone and he has merged with God Almighty. And now like a drop when it goes into the ocean, it cannot be separated from the ocean. It becomes the ocean. So like that, he says that I cannot be separated from God Almighty. अब ये बातें सूरदास ने स्वयं तो खुलासा किया है, लेकिन यही वेदांती दूसरे सिद्धांत वालों को बताओ मानेंगे नहीं। अरे सूरदास तो कृष्ण भक्त थे, मीरा के बारे में भी ऐसे ही बात करते हैं। मीरा को भी रविदास मिले और मीरा सब लोग सचखंड गई, वो नहीं मानेंगे, कहते नहीं मीरा कृष्ण भक्त ही थी, क्योंकि उसके आगे इनको कुछ पता ही नहीं। So he has made this disclosure in his own Bani. Now if we talk to any Vedantis, they will refuse to accept that Surdas has said this and that Surdas has actually experienced all of this because they believe he was only a devotee of Krishna. Like that they also talk about Meera and they refuse to accept that she was also a saint. Because in Vedas, beyond the Brahm, there is no existence. There is nothing that is there beyond Brahm. So they do not accept all of these things. But Meera, when she got in the company of Sant Ravidas, she also was able to go within and manifest God Almighty. सूरदास सार लकी पाया लकी लकी अलग काया सतगुरु गमन गली घर पाया सिंध में बुंद समाया। कल का क्या प्रोग्राम है? कल का 1 घंटा सत्संग रहेगा। सुबह क्या नहीं लगता, 7 से 8, फिर 10 बजे सत्संग। 10 बजे। बीच में एक स्नैक्स वो करना। हाँ, बीच में उनका नाश्ते का टाइम और उसके बाद भंडारा और उसके बाद दर्शन। हाँ, भंडारा बोला वही 10 से 11 सत्संग रहेगा ना, उसके बाद लास्ट दर्शन। तो भंडारा के बाद। Tomorrow the program will be like this. There will be meditation in this hall at 7 o'clock. Instead of 2 hours, the meditation program will be for 1 hour, from 7 to 8. And thereafter there will be the morning, there will be light snacks in the morning. And there will be satsang starting at 10 o'clock. So after that, there will be the Bhandara lunch and darshan will be after the Bhandara.